स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर और मॉड फंक्शन दिया हुआ है। तो ऐसे फंक्शन का अगर हमें लिमिट निकालना है तो फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड द मॉड फंक्शन। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू हमें दो एडजेसेंट इंटीजर्स के बीच में निकालनी चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पे जीरो माइनस है तो आई वुड प्रिफर पहला -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0। इसमें आंसर होता है लोअर इंटीजर, सो दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 है। और अगर अगला इंटरवल में लू 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1 तो ये इंटीजर में अगेन इस इंटरवल में इसकी वैल्यू कितना है 0। हमेशा याद रखना दो एडजेसेंट इंटीजर लेना है और in that interval the lower integer is your correct answer for greatest integer। सेम फैशन में आपको mod x की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए that mod of x is equal to -x for x less than 0 and it is equal to plus x if x is greater than or equal to 0। यूजिंग दिस प्रॉपर्टी अब हम अपना लिमिट देखते हैं L लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस मॉड x साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर the whole upon mod x। तो बच्चों सबसे पहले आप ये समझो ये लिमिट x tends to 0 minus, when you represent in this way it means x is very close to 0 and this minus sign indicates x is less than 0। तो अब x less than 0 में आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर और मॉड की वैल्यूज रिप्लेस करनी है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या है बच्चा -1 प्लस मॉड x की वैल्यू आप लिखोगे -x साइन ऑफ मॉड x की वैल्यू इट इज साइन ऑफ -1 द होल अपॉन अगेन मॉड x यू विल राइट एज -x। रीराइटिंग दिस अगेन ध्यान से देखिए लिमिट x tends to 0 minus this x and x will get cancelled, so you are left with -1 minus x sine of -1 is minus sine 1 और नीचे -1। ओके जैसा कि आप देख सकते हो साइन ऑफ minus theta, I hope you remember it is minus sine theta। Again this minus and minus will get cancelled and when you apply the limit you will be getting -1 x की limiting value 0 और sine 1। okay, so finally the answer that you are left with is minus sine 1। So correct choice for you in this case is D।